जी, Assalamu alaikum to all the students. I hope you can all hear my voice clearly. So, in our previous lecture, we started up with the oral embryology. So, is my voice clear to all the students? If there is any difficulty in hearing, you can just tell. So, in our last lecture, we started off with the oral embryology section and we were discussing we ended our lecture while we were discussing the pharyngeal arches. These are basically the extensions of the ectodermal layer, and so the pharyngeal arches, these basically have three components. They consist of uh, the outer, that is the ectodermal layer, and internally these are lined by the endoderm, and in between these two layers is the mesoderm and the or the neural cluster cells. ठीक है? So the mesoderm and the neural cluster cell, these are the cells that transform into the mesenchymal cells. So the ectodermal layer, this externally it is lining all these three, all the pharyngeal arches that are six in number, and we discussed the different components of the first two arches, and now we will go through the last two of the arches that are involved in formation of different components of the facial and the neck region. So the third arch, it is involved in the formation of the lower body and greater horn of the hyoid bone. Okay, so as far as we remember regarding different components, तो हमने hyoid bone के बारे में ये पढ़ा था कि it consists of a lower body, greater horn and upper body and the lower horns. So two of the other components are formed by the second pharyngeal arch. These are the two components that develop of the hyoid bone that develop from the third pharyngeal arch. And then we have the muscular component, that is the stylopharyngeus muscle, that is going to arise from the
So I hope you can clearly hear me now. We were discussing the different components of the third pharyngeal arch. So these are the components that develop from the third pharyngeal arch. We have discussed the cartilaginous component, the stylopharyngeus muscle, that is the muscle of the lateral wall of the larynx, and then we have the arterial and nervous component of these nerves, the third pharyngeal arch. So I would again like to ask if all of the students can hear me clearly now. Okay. So now as we are going to discuss all these different components. So we were discussing the arterial and nerve components of the third pharyngeal arch. So you can clearly see the common carotid artery, proximal part of the internal carotid, and the nerve is the glossopharyngeal nerve, that is the ninth cranial nerve, and you can see specifically which portion of the tongue it is going to supply. So you have the sensory function to provide taste to the posterior third of the tongue as well as the general sensation. इन केस ऑफ एंटीरियर टू थर्ड आपने पढ़ा था कि कौन सी जो है वो सेंसरी फंक्शन देगी फॉर टेस्ट और जनरल सेंसेशन के लिए कौन से नर्व की कौन सी स्पेसिफिक ब्रांच होती है इन केस ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड देयर इज ओनली द ग्लोसोफिरिंजियल nerve. So now coming to the fourth pharyngeal arch, you can only see that in this fourth pharyngeal arch you will see different portion of the neck that are going to develop. Now first of all are the laryngeal cartilages, वो आपको पता ही होंगे जिन्होंने anatomy पढ़ी है. So these are the thyroid, cuneiform and corniculate cartilages that develop from the fourth pharyngeal arch. Then you have the muscular derivatives that includes the constrictors muscles of the pharynx. And then you have the levator palatini, one of the muscles of the palate, and then the cricothyroid. So these are all the muscular derivatives. Then finally you have the vascular derivatives that includes the arterial as well as the nervous supply. That includes the proximal part of the subclavian artery of the right side. ठीक है? And one of the nerves that is associated to the fourth pharyngeal nerve is the vagus nerve. ठीक है? And then you can see the vagus nerve जो है वो that basically supplies to all the different regions in the larynx. And then it is also written that one of the branches of the vagus nerve, that is the superior laryngeal nerve, that provides also supplies to the root of the tongue, that is immediately posterior to the posterior one third of the tongue. So that is specifically supplied by the superior laryngeal branch. Okay. So these are all the different pharyngeal arches जिनसे कि आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से specifically different structures develop होते हैं. Then we come to the opposite side of these arches. That is the internal aspect of these arches. So at the internal aspect of these arches, you will find the pouch-like structures that are known as the pharyngeal pouches. And as I told you earlier, that on the inner side of the inner side of arches is lined by the endoderm. So what are pharyngeal pouches? These are depression-like structures present on the endodermal surface in between the adjacent pharyngeal arches. ठीक है? So उसी तरह से इनका भी total number जो है वो 6 होता है, but the fifth and sixth are transient as they are going to degenerate as the
different pouches, they are going to give rise to different structures of the head and neck region. The fifth and sixth pouches, they are going to degenerate without giving rise to any of the structures. So this is one of the images just to give you an idea what is the location of these three different uh, layers, that are the ectoderm, mesoderm and endoderm. ठीक है, और इसी तरह से इंटरनली आपको वो दिखा रहा है व्हाट इज द location of the neural clusters or the neural cluster cells. So blue is the internal lining of the pharyngeal arches, ठीक है। और pharyngeal arches में आप देखेंगे जो ब्लू कलर जैसे ही एक आर्च वाला सेक्शन एंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको एरो हेड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक प्रॉपर डिप्रेशन बना हुआ है, दैट जिसको कि उसने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वहां पे वो डिप्रेशन के अंदर एरो हेड दिखा रहा है। सो ये जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं in between the arches and lined by the endodermal layer, these are the pharyngeal pouches. These are pouch-like structures between the adjacent arches on the endodermal surface. So this is how it looks like. This is a very rough representation of arches, pouches and also the cleft. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर उसने आर्चेस लेबल की हुई हैं, उसके इनर साइड पे जितने भी डिप्रेशन है दीज आर द पाउचेस, ठीक है, जो कि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं इससे लेफ्ट साइड की पिक्चर पे, ठीक है। और क्लेफ्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द डिप्रेशन और बेसिकली द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट आर्चेस एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। बेसिकली दिखाने का उसका मकसद ये है इस रफ पिक्चर में कि एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस के ऊपर किस तरह से डिफरेंस होता है और किस तरह से आर्चेस, क्लेफ्ट और पाउचेस आपको विजिबल होंगे। सो यू कैन सी द pouches are visible on the internal or the side where the pharynx is present. So this is their location and they appear like a pouch. Then we have this table that shows the different internal body parts that grow from the first four pouches. So from the first pharyngeal arch that is present close to your facial region, that is going to give rise to the pharyngotympanic tube and the cavity of the middle ear. Then secondly, ठीक है, इसी तरह से अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की सीक्वेंस को याद रखें तो आपको याद रहेगा कि सबसे ऊपर वाली जो पाउच है that is giving rise to some of the part of your ear, that includes the middle ear cavity and the pharyngotympanic tube. Secondly, the pouch number 2, that is involving the palatine tonsils region, ठीक है। So it is very clear that the pouch 2 is going to give rise to the palatine tonsils that specifically develop in the tonsillar fossa, and it also forms the epithelium of the palatine tonsils that are present in your oral region. Posterior most जो part होता है ना आपका, ठीक है, वहाँ पे आपको ये tonsils visible होते हैं। Then you have the pouch number 3, ठीक है। और थोड़ा आप नीचे आए हैं तो नाउ इट इज द थर्ड पाउच इज रेफरिंग टू द inferior parathyroid gland and the thymus. So these are the two different uh, glands you can say that are present around in your neck region, ठीक है। So inferior thyroid gland आपको पता है it lies posterior to the thyroid gland, and then the thymus, it is one of the organs that is present somewhere in your chest behind your sternum, ठीक है। आपकी जो रिब केज होता है that is joined by a bone from the center that is known as sternum, तो उस sternum के बिल्कुल पीछे जो है ना, this is the organ that is known as thymus. It is located somewhere in your chest region once it has completely developed, ठीक है। and this structure is basically involved in regulation of the T cells, ठीक है। अगर T cells का आपने शायद फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि these are cells that are involved in against uh, action against different microorganisms, ठीक है, destruction of the microbes
So the thymus basically regulates your immune system, specifically the T cells that are responsible for action against the different microbes. So these are the two structures that develop from two different parts of the third pouch, dorsal and ventral region. Then is the pouch number 4, that is giving rise to the superior parathyroid gland that emerges from the dorsal part. And then lastly you have the ultima brachial body that arises from the ventral part. So regarding ultima brachial body, आपके book में mention होगा कि it is gives rise to the parafollicular cells of the thyroid gland. ठीक है. So parafollicular cells of thyroid gland क्या होते हैं? These are the cells of the thyroid gland that basically regulate the calcitonin. ठीक है. अब calcitonin क्या होती है? Calcitonin is a hormone that what it does is that it stops the activity of the osteoclasts, or this is the hormone that you can say that it prevents the resorption of the bone, prevents resorption of the bone. So it is going to inhibit the activity of the osteoclasts. ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है कि जब बोन से कैल्शियम जब सिक्रीट नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड में जो है वो कैल्शियम का लेवल वो कम हो जाता है. ठीक है. ये इस तरह का ये आपके जो पेरिफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड है ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाता है. ठीक है. So then these cells are, the calcitonin is secreted and it will prevent the further breakdown of calcium from the bone, because your blood no more needs the calcium to be present in your blood. So this is the basic structure, the ultimate brachial body that is giving rise to the parafollicular cells, and the parafollicular cells are involved in the regulation of calcitonin. Then you have the final structure regarding the pharyngeal arches, pharyngeal pouches, that is the pharyngeal cleft. इसको मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था कि the basic एक separation होती है ना between the two pharyngeal arches on the external surface. उसको आप कहते हो pharyngeal cleft. तो तीनों का आपने बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि जो arches and pouches हैं, arches are developed on the ectodermal surface. So similarly is the case in the pharyngeal cleft. ठीक है. These are also the structures present on the ectodermal surface. Only the pharyngeal pouches, these develop from the endodermal surface. So जिस तरह से pharyngeal arches का total number 4 है, same goes for the arches for the pharyngeal cleft, that they are 4 in number. And a very significant feature you can study is that only the first cleft is going to give rise to the external auditory meatus, that is a component of your external ear. ठीक है. जिसके ऊपर ये आपका ईयर का जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. रेस्ट ऑफ द क्लेफ्ट्स, these are only going to develop into cervical sinuses temporarily. ठीक है. और ये टेम्पोररीली ये जो साइनसेस बनते हैं, ये सर्वाइकल साइनसेस, ये उस वक्त डीजनरेट होते हैं जब आपकी जो फेरेंजियल आर्चेस हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में प्रोलिफरेट कर जाती हैं. ठीक है. तो क्योंकि इन साइनसेस की स्पेस नहीं रह जाती, सो दीज साइनसेस आर गोइंग टू degenerate, or they are going to albitrate once the pharyngeal arches give rise to different structures. ठीक है. Now if due to any abnormality these sinuses, if they stay, they are going to give rise to two abnormal can give rise to two abnormal structures that are known as the fistula. One of them is the brachial fistula. Second, you can study the pharyngocutaneous fistula. ये fistula होता है basically
that is a narrow opening between one of your organ with the external surface. ठीक है. Now how a fistula can appear is, फर्ज कर लें brachial fistula, ये probably आपके neck region में बनता है. ठीक है. And what sort of a structure it is कि एक narrow tube like structure होगी. ठीक है. जिसकी वजह से आपका larynx या pharynx का region जो है वो connect हो जाता है with the external environment. ठीक है. So this is what a fistula is, that these are narrow structures that develop as a result of abnormality, as a result of which your internal organs they become connected to the external environment. ठीक है. So to get rid of these, the only way is to extract or uh, surgically remove these tracks or the narrow channels that are formed. So this is all you need to remember regarding the pharyngeal clefts, and these abnormalities that we have discussed, इनका chance of occurrence जो है वो बहुत कम होता है. So if they occur, then they have to be removed surgically. So this is all you need to remember about the pharyngeal cleft. Then we come to the development of skull. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ स्कल में हम पहले देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. So you would have gone through these three different components even in your anatomy. That is the cranial vault, cranial base, and then come your facial region. And this is the basic idea that you need to remember regarding the development of these three structures, that the cranial vault and the bones of your face. Most of these structures, these are going to develop from the membranous ossification. ठीक है, जिसकी वजह से आप इनको membranous bones भी कहते हैं. So whenever you study regarding a structure, अगर उसके बारे में लिखा हुआ है कि these are the membranous bones, it means that they develops from membranous ossification. Then secondly, regarding the base of the skull, it is written that it develops through endochondral ossification, which means that first of all, the mesenchymal cells, they will give rise to a cartilaginous structure, and that cartilaginous structure is then going to transform into the bone. In case of cranial bolt and facial bones, इस तरह नहीं होता. जो आपके जो mesenchymal cells हैं, they give rise directly to the osteoblast, which develop into the which develop the bones of your cranial vault and the face. ठीक है. इसमें जब डेवलपमेंट की स्कल की बात आती है तो हम इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द क्रेनियल वोल्ट. ठीक है. एक तो आपका जो क्रेनियल वोल्ट है और जो क्रेनियल बेस है. ठीक है. इसका स्पेसिफिकली जो डिटेल्ड इनकी डेवलपमेंट है इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्डल ऑसिफिकेशन, वो आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे. ठीक है. In this chapter I will just give you a general idea of the intramembranous and endochondral ossification. So this is a general idea of the membranous ossification that occurs in your cranial vault region. ठीक है. So आप cranial vault की अगर आपको anatomy याद हो तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर different sutures होते हैं. ठीक है. तो जो bones होती हैं जैसे कि parietal, frontal, occipital bone है, these bones are connected through the sutures. ठीक है. So now whenever a young individual is born, तो आपको पता होगा कि ये जो sutures वाली जो region होता है, that is basically not completely developed. ठीक है. इस जहाँ पे sutures आपके meet कर रहे होते हैं वहाँ पे एक space होती है that is known as the fontanelle. ठीक है. Anterior and posterior fontanelles आपने पढ़े होंगे, that are present in a newborn baby. So what is going to happen, वो जो sutural spaces होती हैं वो close किस तरह से होती हैं, that those sutures or the bones, these are basically covered by a periosteal layer. ठीक है. अगर इस image को आप देखें
तो उसने पेरियोस्टियम को लेबल किया हुआ, ठीक है, ग्रे रीजन, ठीक है। तो उसकी उसने दो लाइनिंग्स दिखाई हुई हैं, एक आउटर लाइनिंग है और एक इनर लाइनिंग है, ठीक है। सो आप आउटर लाइनिंग देख सकते हो कि इट इज पासिंग थ्रू द बोथ द एडजेसेंट बोन्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे आप फर्ज कर लें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स ऑफ द स्कल, दैट इज द फ्रंटल एंड द पेराइटल बोन, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे जो पेरियोस्टियम की जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है वो दोनों बोन्स के ऊपर से एज इट इज पास कर रही है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द और द फाइब्रस लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, ठीक है। सो जो इसने यहाँ पे पेरियोस्टियम लेबल किया हुआ है उसकी ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज द फाइब्रस पेरियोस्टियल लेयर। इसको आप देखेंगे ये एक बोन से दूसरी बोन की तरफ विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बेंड और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दोनों बोन्स के ऊपर से डेवलप पास कर रही है, ठीक है। इसकी ही आप जब इंटरनल लेयर देखते हो जिसको इसने ऑस्टियोजेनिक बोन फ्रंट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी इसके नीचे वाली जब लेयर देखते हैं तो वो आप देखें कि बोन के मार्जिन के ऊपर आके इंटरनली बोन की तरफ बेंड कर जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस द मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इन द क्रेनियल वोल्ट अकर्स, कि इसकी जो फाइब्रस लेयर है that is going to outer fibrous layer is going to pass through without any bend through the two adjacent bones. The inner layer that is known as the osteogenic layer is going to bend towards the bone, ठीक है। दोनों केसेस में आप देखेंगे द इनर लेयर इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव बोन्स, और ये जो ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द लूज vascular connective tissue and is it also consists of bone cells, ठीक है। इसको ऑस्टियोजेनिक लेयर या ऑस्टियोजेनिक बोन फ्रंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस लेयर में इट कंसिस्ट ऑफ द बोन सेल्स, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है ऑस्टियोजेनिक लेयर दैट इज कवरिंग द बोथ द एंड्स ऑफ द बोन्स, यहाँ पे आपके जो है वो बोन की ग्रोथ होती है, ठीक है। इस बोन की ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि ये जो सूचर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। एंड देन यू कैन सी अ फाइब्रस लिगामेंट दैट इज प्रेजेंट when these sutural bones have not grown to their complete length। तो जिस तरह से ये osteogenic layer जो है ये ग्रो करती जाती है इसी तरह से ये sutural स्पेस जो है वो रिड्यूस होगी और इस तरह से आपके जो क्रेनियल वोल्ट की जो बोन्स हैं वो आपस में सूचर की फॉर्म में मीट कर जाती हैं। So this is all you need to remember that both the periosteal layers how they are involved in the development of the cranial vault. So this is how the osteogenic layer is going to play its role to close the gap between the two adjacent bones of the cranial vault. So then we come to the formation of space the formation of the facial region. So starting the formation of face we can discuss is that हमने पढ़ा हुआ है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो किस तरह से होता है कि देयर इज अ बेंड इन द head region. So now what is going to happen in the formation of face that a localized thickening is going to develop within the ectoderm of the frontal prominence that is known as the olfactory placode, ठीक है। now beneath these ectoderm layer of the head region आपको पता है कि क्या होता है, न्यूरल ट्यूब होती है और न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। सो दोज न्यूरल क्रस्ट सेल्स they go under epithelio mesenchymal transformation and then they develop into the mesenchymal cells, ठीक है।
So now in that bulging region of the head, we have the mesenchymal cells, and the proliferation of these cells will lead to the development of the facial region. And once the frontal eminence, the cells of the frontal eminence, they continue to proliferate, they will develop into a horseshoe shaped ridge like structure. ठीक है, that is basically an extension of the olfactory placodes. ठीक है, इसी horseshoe shaped structures के दो ends होते हैं, एक median arm of the horseshoe and then is the lateral arm that are known as the medial and lateral nasal processes. ठीक है, ये आपको मैंने एक सब हमने इमेज दिखाया था जब एम्ब्रियो की फोल्डिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, सो जिस जिस तरह से आपकी फेरेंजियल आर्चेस और पाउचेस क्लेफ्ट एक तरफ डेवलप होते हैं, उसी तरह से ग्रोथ होती है आपकी हेड रीजन में। ठीक है, तो ये आप हेड फोल्ड देख रहे हैं, इसमें फ्रंटल प्रोमिनेंस आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जब फ्रंटल प्रोमिनेंस कंटिन्यू होती है तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर दैट इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, उसमें जो ये फ्रंट वाला रेज्ड सा एक जो मार्जिन नजर आ रहा है, ये फ्रंटल प्रोमिनेंसी है। ठीक है, अब फ्रंटल प्रोमिनेंसी के रीजन में जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, दे गिव्स राइज टू द olfactory placodes। ठीक है, जिसको कि आपने पीछे पढ़ा था कि देयर आर टू लोकलाइज्ड थिकनिंग्स दैट डेवलप इन द फ्रंटल प्रोमिनेंसी। ठीक है, सो वंस द एम्ब्रियो हैज फोल्डेड, उसके जो फ्रंटल एमिनेंस के रीजन के जो mesenchymal cells हैं, they start proliferating and they give rise to two bulging regions in the frontal prominence that are known as the olfactory placodes। ठीक है, तो olfactory placodes की एक्सटेंशन की वजह से आप देखो कि नीचे उसके बिल्कुल एक horseshoe shape structure बन रहा है। ठीक है, तो ये horseshoe shape structure के आप देखो कि दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सेंटर में जो एक horseshoe shape structure पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज द मीडियल नेजल प्रोमिनेंसी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द नेजल पिट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है मीडियल और नेजल लेटरल नेजल पिट्स होती हैं। ठीक है, तो ऊपर आगे olfactory placodes that are formed by the proliferation of the mesenchymal cells in the frontal region। उसके बाद क्या है कि इसी की जो फ्रंटल प्रोमिनेंसी की जो proliferation होती है इनके cells की, that gives rise to the medial a horseshoe shaped structure that consists of medial and lateral nasal processes। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर लेबल किया है, ठीक है, दिस इज द मीडियल नेजल प्रोसेस। ठीक है, इसके एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, दिस इज द lateral nasal process। So this is how it is going to look like। These are the two horseshoe shaped structure that are formed by the, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, horseshoe shaped ridge like structures formed that convert the placode into the nasal cavities। ठीक है, so these horseshoe shaped structures are formed by the proliferation of the mesenchymal cells in the frontal eminence। ठीक है, so once these structures are formed, the horseshoe shaped structure, they gives rise to these opening that are known as the nasal pits। ठीक है, so once these structures have developed, further the development of face is going to continue, and then we can see over here that the medial nasal processes and the frontal process, they give rise to the middle portion of the nose। ठीक है, so here you can see in this image। ठीक है, ये एक रीजन है। ठीक है, उसी तरह से मैंने इसको मैग्नीफाई किया पिक्चर को। ठीक है, ये एक रीजन है, दिस इज नोन एज द
मीडियल नेजल प्रोसेस, ठीक है। और ये फ्रंटल प्रोसेस के साथ मीट करके क्या बना देता है, द मिडल पोर्शन ऑफ द नोज। नाउ हियर आई विल टेल यू वेयर द, ठीक है, दिस इज द रीजन, of the frontal prominency. So this region of frontal prominency will combine with the both medial nasal processes to give rise to the middle portion of the nose. ठीक है? Then we have the two grooves that are known as the nasolacrimal groove and the bucconasal groove. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, जिसकी भी आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द nasolacrimal groove। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेपरेट, दिस इज सेपरेटिंग द लेटरल नेजल प्रोसेस एंड द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसी। ठीक है, सो दिस इज द रीजन ऑफ द nasolacrimal groove. Then there is another groove that is mentioned over here, that is the bucconasal groove. The bucconasal groove जो है, it is located in between the maxillary prominency and the medial nasal process। ठीक है, so this grooves क्या होते हैं, these are basically the structures that are separating these two adjacent prominences। So this is the location of the bucconasal grooves, so you can see these grooves and the different region of this fold। ठीक है, अब ये सारे जो ग्रूव्स और प्रोमिनेंसीज हैं, मीडियल नेजल प्रोमिनेंसी, फ्रंटल प्रोमिनेंसी एंड आल्सो द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसी, these have developed। Now what is going to happen is that you will see the different region of face developing from these prominences। So we have discussed that medial nasal process and the frontonasal process, they will give rise to the mid portion of the roots of the nose, and the medial nasal process of opposite side, they will converge to form the middle portion of the face that includes the upper lip, philtrum and part of the maxilla। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था कि मीडियल नेजल प्रोसेस है ये वाला एक, ठीक है, और एडजेसेंट साइड पे मीडियल नेजल प्रोसेस कौन सा है, ये वाला। So when these medial nasal processes, they are going to fuse together, they will give rise to the upper lip or the mid portion of the upper lip that includes the philtrum and the central or the part of the maxilla। Philtrum क्या होता है? This is basically a depression like structure that is present in between the nose, tip of the nose and the upper lip। ठीक है, एक depression like structure होता है, this is known as the philtrum। ठीक है, then we have the last point that state the forward extension of maxillary process and the lateral aspect of medial nose, medial nasal process, this will form the lateral aspect of the upper lip। ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये जो एक एरो हेड है, ठीक है, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, दिस इज लेबलिंग द मैक्सिलरी प्रोसेसेस। ठीक है, और ये एक एरो हेड आपको दिखा रहे हैं, this is the, this is labeling the lateral aspect of the medial nasal process। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर के दरमियान हमने पढ़ा था बक्को नेजल ग्रूव बनता है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स जब फ्यूज करेंगे तो दे विल फॉर्म द lateral aspect of your upper lip। So this is how the different sections of your face are going to develop, that involve your mid portion of your nose, the central part of your upper lip and then also the lateral aspect of your upper lip। ठीक है, अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से डिफरेंट
रीजन्स डेवलप होते हैं ऑफ द maxillary bone. So now coming to the development of maxilla, this the development of face and also the development of maxilla, this is occurring during what you can say about 28 to 35 days of development or the embryonic life. Okay, so now you have studied how different regions of the upper lip are going to develop. So when these different sections of upper lip are developing, simultaneously the maxilla is going to develop underneath. And what are the structures that are involved in the formation of this maxilla is that the mesenchymal cells, they will first of all develop a primary ossification center. ठीक है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होता है? इट इज बेसिकली द रीजन इन विच the first bone form is laid down, and from that bony structure the bone is going to grow in different direction. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि जो मैक्सिला की डेवलपमेंट है इसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप कहाँ पे होता है? ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो उसने मेंशन किया हुआ है दैट द ऑसिफिकेशन सेंटर इट इज डेवलपिंग वेयर द एंट्रोसुपीरियर dental nerve it is given off. ठीक है, and this anterosuperior dental nerve is basically the branch of the infraorbital nerve. ठीक है, और infraorbital nerve किसकी ब्रांच होती है? maxillary nerve की. ठीक है, so the region where the infraorbital nerve gives rise to the anterosuperior dental nerve is the region where the primary ossification center of maxilla lies. ठीक है, so once that primary ossification center is laid down, now the bone is going to develop into different regions. ठीक है, now you can see the third point that the four bone formation spreads posteriorly. अब आपको पता है कि जब posteriorly जाएगी maxillary region में तो you have a structure that is known as the zygomatic bone below the orbit. ठीक है, इसी तरह से जब एंटीरियरली जाती है तो इट इज गोइंग टू डेवलप द रीजन ऑफ योर इंसाइजर्स. ठीक है, एंड देन इट स्प्रेड्स सुपीरियरली टू फॉर्म द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन. ठीक है, ये एक एनाटॉमी की डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द रीजन where the infraorbital nerve is giving a branch that is known as anterosuperior alveolar nerve. ठीक है, इस ये जहाँ पे एंगल है ना इंफ्राऑर्बिटल नर्व का विद द इंट्रोसुपीरियर एल्वियोलर नर्व, यहाँ पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनता है मैक्सिला का. ठीक है, so the mesenchymal cells present between the angles of these two nerves will give rise to the osteoblasts, and those osteoblasts will then continue to form the bone. ठीक है, अब आप इधर से ज्यूम करें, जब बोन यहाँ से डेवलप होगी तो जब वो सुपीरियरली जाएगी तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. ठीक है, पोस्टीरियरली जब ग्रो करेगी तो आपको पता है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज द zygomatic bone. Inferiorly or anterior direction में growth will lead to the medial portion of the or the incisal region. ठीक है, so this is how the primary ossification center is formed, and then the bone is going to develop in different directions. ठीक है, this is just to show you how the different maxillary processes they are involved in formation of the lateral part of the upper lip, and also how they form the different parts of the maxilla. ठीक है, फिर इसी तरह से हमने देखा कि डाउनवर्ड एक्सटेंशन फॉर्म्स अ ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब होता क्या है कि in case of when the maxilla is going to grow in the anterior direction, तो क्या होता है कि it form the
इंसाइजल रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो इंसाइजल रीजन के आपको पता है कि जब इंसाइजल रीजन आएगा तो नाउ मैक्सिला विल ट्रांसफॉर्म, द बोन विल फॉर्म अ बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? बेसिकली स्मॉल नैरो कैनाल्स और द स्मॉल कंटेनर्स, ठीक है, दैट आर गोइंग टू डेवलप इनटू द एल्वियोलर बोन इन फ्यूचर। ठीक है, और उसी एल्वियोलर बोन में या एल्वियोलस में आपका टूथ जर्म पड़ा होता है। So once the maxillary development is going to proceed in the downward or anterior direction, it will start forming trough-like structures. First of all in the lateral direction, ठीक है, and then in the medial direction. So the downward extension will form the trough-like structures, and in these trough-like structures they develop into the alveolus, and that alveolus contains the tooth germ. ठीक है, सो अब दिस इज रिगार्डिंग द लेटरल alveolar plate. What about the central portion? What is going to happen that आपको पता है कि एक तो मैक्सिला की ग्रोथ हो रही है बोनी स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर साइड, एक उसकी ग्रोथ होती है फ्रॉम द इनर साइड, जिसमें क्या होता है कि मैक्सिला के साथ साथ आपके पैलेटाइन शेल्स भी डेवलप होते हैं। So what is going to happen that when it is going to spread in the palatine direction of the hard palate, so the medial alveolar plate and the palatine process, they will form the body of the maxilla. ठीक है, and this is how the medial or the central part or the of the incisors of the future incisor is going to develop. ठीक है, ये इमेज देखें, इसके ऊपर आपको क्लियरली ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, so this is how the frontonasal process that is labeled as the nasal septum that is formed। और इसी तरह से जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, लेटरल एस्पेक्ट बनता है, ठीक है, एल्वियोलर प्लेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैलेट की भी ग्रोथ देखो कि लेटरल एस्पेक्ट से जो दो शेल्स हैं, दीज आर गोइंग टू ज्वाइन फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, और इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल अल्वेओलर प्लेट डेवलप होती है, और फिर जिस तरह से ये शेल्फ्स जो हैं वो क्लोज आते जाते हैं, उसी तरह से आपका प्राइमरी पैलेट भी डेवलप होगा, एंड ऑल्सो द region of your incisors. So we will end up today till the development of maxilla. We will discuss the rest of the development of palate and further regions in our next lecture. So any questions that you have regarding this topic till now, you can ask. Any questions till the development of maxilla that you have, you can ask. So regarding development of maxilla, you have to remember that the maxilla develops from the intramembranous ossification। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया ना कि पहले जो प्राइमरी ossification center है, that is formed between the angles of two bones, and then it is going, the bony components of the maxilla are going to develop. So any questions that you have regarding this till the development of maxilla, you can ask.
So regarding the development of face, what you need to remember is, मैं आपको पिक्चर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समझाता हूँ, ठीक है। सो ये वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है। वंस द एम्ब्रियो इज गोइंग टू फोल्ड, ठीक है, उसमें क्या होता है कि स्टिल द एक्टोडर्म इज कवरिंग द फ्रंटल प्रोमिनेंसी, ठीक है। लेकिन फ्रंटल प्रोमिनेंसी या जहाँ पे आपके हेड का रीजन डेवलप होता है, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू द मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है। सो जिस तरह से फ्रेंजल आर्चेस के साथ साथ डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी तरह से ये जो हेड रीजन है उसके भी जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर राइट साइड के इमेज को देखें तो ये एक इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंटल व्यू है, ठीक है। तो फ्रंटल व्यू से आप देखोगे जो फ्रंटल प्रोमिनेंस होती है ना, यहाँ पे जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन और उनकी मल्टीप्लिकेशन से या प्रोलिफरेशन से क्या होता है, यहाँ पे टू फ्रंटल प्रोमिनेंसीज बनती हैं जिनको कि आप कहते हो टू लोकलाइज्ड थिकनिंग्स दैट आर नोन एज द ऑल्फैक्टरी प्लेकोर्ड्स, ठीक है। उन ऑल्फैक्टरी प्लेकोर्ड्स की फर्दर डिवीजन्स की वजह से दो हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर्स बनते हैं दैट आर नोन एज द मीडियल नेजल एंड द लेटरल नेजल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लेबल भी कर देता हूँ, ये मीडियल नेजल प्रोसेस है, ठीक है, और ये लेटरल नेजल प्रोसेस, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जब हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो देन देयर इज अनदर स्ट्रक्चर इज फॉर्म दैट इज नोन एज द नेजल पिट, ठीक है, दैट डेवलप्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ दिस हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो नेट्रल और मीडियल नेजल प्रोसेसेस हैं, इनमें भी इसी तरह से इनके जब सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं दे गिव्स राइज टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द फेशियल रीजन। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो मीडियल नेजल प्रोसेसेस हैं, जो कि आपको ये हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, these later they are going to fuse together and they will form the middle section of your nose, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आप देखो, द मीडियल नेजल प्रोसेस ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है, दे विल फॉर्म द पोर्शन ऑफ द अपर लिप, फिल्ट्रम एंड द मैक्सिला, और मीडियल नेजल प्रोसेस एंड द फ्रंटो नेजल प्रोसेस, ठीक है। फ्रंट इस पिक्चर में आपको बताया था कि फ्रंटो नेजल प्रोसेस कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। ये और ये आपके जो मीडियल नेजल प्रोसेसेस हैं ये कंबाइन करके क्या बना देते हैं, द दिस सेक्शन, ठीक है, द मिडल सेक्शन ऑफ योर नोज, ठीक है। जब ऑपोजिट जो दोनों मीडियल नेजल प्रोसेसेस हैं ये फ्यूज करेंगे तो ये एक तो आपकी टिप ऑफ द नोज बनाएंगे और क्या बना देंगे, फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप एंड द मीडियल पार्ट ऑफ योर अपर लिप रीजन, ठीक है। पार्ट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अपर लिप, फिल्ट्रम एंड पार्ट ऑफ द मैक्सिला दैट इंक्लूड्स द इंसाइजर एंड प्राइमरी पैलेट रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ये जो आपका लेटरल एस्पेक्ट है ऑफ द medial nasal process or maxillary process, these fuse together to form the lateral aspect of your upper lip, ठीक है। So this is how the different structures of the facial region are formed, ठीक है। और simultaneously जैसे ये structures बन रहे होते हैं उसी तरह से आपके maxilla की development start हो जाती है, ठीक है। If you are clear, is everyone clear regarding the development of maxilla, ठीक है। So you can ask if you have any confusion regarding the development of maxilla and the development of facial region. So are you clear about formation of face now, ठीक है। ये different prominences होती हैं जिनकी फ्यूजन से आपके facial structures और upper lip के जो structures हैं वो develop होते हैं।
So are you clear about the formation of face? ठीक है, so इस तरह से सीक्वेंस से आप याद रखें. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फर्दर द ऑल अदर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अगर मैक्सिला में कंफ्यूजन हो, इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. So thank you for your time. We will finish our this chapter in the next lecture.